Hi and welcome to Asian Photography. My name is Bhavya Desai and today is all about the iPhone 15 Pro Max and the iPhone 14 Pro Max cameras. तो ये iPhone 15 Pro Max जो है ये आज से अवेलेबल हो गया है एंड सबको जानना है कि इसका कैमरा कैसा है, especially against the iPhone 14 Pro Max because अब ये iPhone 14 Pro Max का कॉस्ट जो है ये कम हो गया है. This now comes for about 1,44,000 and starts at that, and the iPhone 15 Pro Max starts at about 1,60,000 approximately. अब ये दोनों प्राइस डिफरेंस में आपको क्या अपग्रेड्स मिलते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द कैमरास, बिकॉज दोनों के ऑन पेपर आइडेंटिकल कैमरा सेटअप है एक्सेप्ट ऑफ कोर्स द टेलीफोटो लेंस. तो ये वीडियो में हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे इन टर्म्स ऑफ द कैमरास. बट ये वीडियो देखने के पहले प्लीज मेक श्योर करिए कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बिकॉज लिटरली हम डे इन डे आउट शूट कर रहे हैं सिंस द पास्ट फ्यू डेज टू ब्रिंग यू दिस वीडियो एंड ऑफ कोर्स इट मोटिवेट्स अस एज वेल. हमें कमेंट्स में भी बताइए कि आपको iPhone 15 Pro Max के अगेंस्ट में कैमरा टेस्ट किसके साथ में चाहिए, सो वी कैन फीचर दैट एज वेल. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जो कैमराज होते हैं वो हमेशा वन ऑफ द टॉप फीचर्स होते हैं फॉर एनी कंज्यूमर व्हेन दे आर डिसाइडिंग टू बाय अ प्रोडक्ट एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एप्पल एज वेल. अगर आप नोटिस करेंगे कि जब से इन्होंने अपना खुद का सिलिकॉन बनाना शुरू किया है, their cameras have actually become much better because they are able to combine that computing power along with the iOS to deliver much better than what their spec segment is. Just think about it. काफी टाइम तक एप्पल ने एक्चुअली अपने कैमरास को 48 मेगापिक्सल तक अपग्रेड नहीं किया था. दे वर स्टिल एट द 12 मेगापिक्सल, बट 12 मेगापिक्सल के साथ भी दे वर एबल टू पैक अ वेरी गुड पंच व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल आउटपुट. नाउ इन दिस केस एज वेल, देन जब भी इन्होंने अपडेट किया एंड जब भी एक नया फोन वो लॉन्च करते हैं स्पेशली विद अ फ्यू हेडलाइनिंग फीचर्स फॉर द कैमरास, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ. द रीजन इज बिकॉज विद एप्पल इफ यू ऑलवेज नोटिस इट इज ऑलवेज अबाउट द लिटिल थिंग्स एंड वो जो छोटी चीजें हैं they actually make your life much easier, deliver a little bit more than what you would expect, and that is what makes you happy. But before we start looking at the images, let's take a look at both the cameras and what the triple camera setup is. तो ये दोनों फोन्स में द कैमरा सेटअप इज वेरी सिमिलर. फॉर इंस्टेंस जो मेन कैमरा है दैट इज स्टिल द 48 मेगापिक्सल क्वाड बेयर f1.78 एपर्चर. अगर वाइड एंगल के बारे में बात करें तो एक 12 मेगापिक्सल विद f2.2 एपर्चर का लेंस आता है व्हिच इज सेम एग्जैक्टली इन दी 14 प्रो मैक्स एज वेल. द बिगेस्ट डिफरेंस ऑफ कोर्स है जो उसमें टेलीफोटो लेंस में है, जो अभी फिर भी एक 12 मेगापिक्सल ही है with the f2.8 aperture, but now of course it can shoot up 5x and also go all the way up to 25x. Now front कैमरा के बारे में बात करें तो ये exactly same 12 मेगापिक्सल का कैमरा आएगा आपको with a f1.9 aperture. But the biggest difference is कि 15 Pro Max जो है ये अभी HDR5 शूट करता है as compared to the 14 Pro Max which has HDR4. Also इसमें जो है ये थोड़े से न्यूअर कोटिंग्स डाले गए हैं, बट दोनों का जो परफॉर्मेंस है वो ओके है. अगर लेंस फ्लेयरिंग और घोस्टिंग के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो व्हाट्स आल्सो इंटरेस्टिंग इज दैट कि ये दोनों कैमरा ऑब्वियसली पोजीशन वाइज काफी आइडेंटिकल है एंड माइनर ऐसा लगता है कि 14 Pro Max जो है वो थोड़ा सा प्रोट्रूडिंग है as compared to the 15 Pro Max. But what's interesting is that when you actually look at the telephoto lens of the 15 Pro Max, then उसका जो structure और जो make और build है उसमें आपको clear difference पता चलेगा as compared to the 14 Pro Max. Now before we start looking at the images, let me just tell you कि ये दोनों cameras जो है उनको हमने update किया है to the iOS 17.0 before starting to shoot a lot of these images. Also, ये 15 Pro Max जो है ये अभी actually एक 24 मेगापिक्सल का bind image दे सकता है, जो बेसिकली ये फोन जो है एक 12 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन क्रिएट करके एक 24 मेगापिक्सल का इमेज देता है, which as compared to the 14 Pro Max is different. एंड इसके वजह से इसका रेजोल्यूशन जो है और शार्पनेस और डिटेल्स ये काफी अच्छा होता है एंड दैट्स वेरी एविडेंट इन द पिक्चर्स एज वेल. एंड इन टर्म्स ऑफ डे लाइट इमेजेस ये दोनों फोन्स के आउटपुट जो है ये काफी अच्छे और शार्प आते हैं. देयर इज गुड शार्पनेस, देयर इज गुड डिटेल इन बोथ ऑफ देम. बट सबसे बड़ा डिफरेंस ये दोनों फोन्स के बीच में है कि ये 15 Pro Max जो है ये ज्यादा वार्मर टोन देता है अभी एज कंपेयर्ड टू एनी ऑफ द आईफोन्स दैट आई हैव एवर यूज्ड बिफोर. एंड मच लाइक द अदर फोन्स ये अपील करता है अपने कंज्यूमर्स को विद वार्मर टोन्स. द पिक्स लुक मोर वाइब्रेंट एंड मोर पॉपी एज कंपेयर्ड टू द 14 Pro Max.
एंड मेकिंग यूज ऑफ दैट स्टैक्ड आउटपुट, जूम इन करने पे भी आप अगर देखेंगे तो ये इमेज जो है ये काफी शार्प है ऑन द 15 Pro Max एज कंपेयर टू द 14 Pro Max। अब अगर हम लोग डे लाइट अल्ट्रा वाइड कैमरास के बारे में बात करें, देन ये इमेजेस जो है ये अगेन काफी अच्छे आए हैं दोनों फोन्स में, वाइब्रेंट है, सैचुरेटेड है, बट अगेन द 15 Pro Max हैज अ स्लाइटली वार्मर टोन एज कंपेयर 15 Pro Max। जूम इन करने पे ये दोनों के इमेजेस जो है ये काफी डिटीरियोरेट हो जाते हैं एंड इन बोथ केसेस दे आर एक्चुअली नॉट दैट ग्रेट। नाउ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू फोन्स ऑफ कोर्स इज द टेलीफोटो कैमरा, बिकॉज ये 15 Pro Max जो है ये अभी आता है विद अ न्यू टेलीफोटो लेंस व्हिच कैन एक्चुअली शूट अप टू 5x एंड गो ऑल द वे अप टू 25x इन टर्म्स ऑफ डिजिटल जूम। इन कंपैरिजन जो 14 Pro Max है ये ऑफ कोर्स शूट करेगा एट 3x एंड goes up to 15x एट द मैक्स। अब प्रैक्टिकल पर्पस में मुझे नहीं लगता कि देयर आर टू मेनी यूजर्स जो ऐसे टाइप के जूम कैपेसिटी या जूम लेवल पे शूट भी करते हैं। थिंक अबाउट इट, व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि आपने एक्चुअली कोई भी ऐसा इमेज यूज किया हो जिसमें आपने 25x या इवन 100x जो आप कभी भी यूज भी किया है या शूट किया है, अनलेस ऑब्वियसली यू आर ब्रैगिंग टू एनीबॉडी दैट लुक आई हैव गॉट दैट लेवल ऑफ फीचर। प्रैक्टिकल पर्पसेस में मुझे नहीं लगता कि एट दैट जूम लेवल्स एनी ऑफ द इमेजेस व्हिच आर बीइंग शॉट बाय एनी फोन्स आउट देयर आर रियली यूजेबल। एंड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एज वेल, इन केस ऑफ द इमेजेस ये 15 Pro Max जो है ये भी काफी वार्मर एंड वाइब्रेंट टोन्स देता है and surely has a better resolution and sharpness as well on zooming in. But yes, अगर आप ये लेंस से शूट करने वाले हैं at that focal length, then get ready for some heavy distortion from both the phones. Because काफी सारे images जो आप देख भी रहे हैं उसमें the subjects are looking way broader than normal. अब as for the images using at 25x, yes ये surely चलते हैं, the pictures are also okay, but जैसे मैंने पहले भी बताया practicality और real standpoint में these images are very pixelated and really can't be used in general sense. And ये 15 सीरीज जो है इसमें अभी आप एक नॉर्मल पिक्चर को भी पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हो later on in editing. Now this is one of the very critical and useful feature because you have no idea how many moments I've actually missed when shooting a picture and then putting it into portrait mode. Now ये होता है because of course ये phone जो है ये depth mapping करता है using the A17 Pro processor and it allows it to do that. Now of course 15 में ये जो है ये एक hardware driven है, but this also works on a 14 Pro Max provided you've shot any images using the portrait mode. But this is a very useful feature and in terms of images as well, the performance is really good. दोनों के अगर फोटोज के बारे में बात करें then of course it's quite sharp, it's quite nice, detailed, but edge detection जो है ये जो 15 Pro Max है इसका थोड़ा सा और ज्यादा स्मूथ हो गया है। तो ओवरऑल जो एज डिटेक्शन का परफॉर्मेंस है, बोकेज जो है ये काफी अच्छे हैं दोनों में, but the 15 Pro Max has a little bit of the edge. इन टर्म्स ऑफ लो लाइट पोर्ट्रेट्स ये दोनों फोन जो है अगेन दे डिलीवर गुड इमेजेस, ये एज डिटेक्शन एंड सैचुरेशन भी जो दोनों में है ये काफी अच्छा है। बट जो 15 Pro Max है इट अगेन हैज अ लिटिल बिट ऑफ द एज, थोड़ा और बेटर डिफाइंड परफॉर्मेंस है मच लाइक डे लाइट। अभी लो लाइट इमेजेस के बारे में बात करें तो ये दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा है, शार्प क्रिस्प इमेजेस आते हैं, गुड डिटेल आते हैं, बट जूम इन करेंगे और अल्ट्रा वाइड तो थोड़ा सा आप अगर ब्लूइश का आपको टिंज देखने मिलेगा एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट व्हेन यू गो इनटू द मोर फोकल रेंज देन ये वार्मर टोन्स हो जाएंगे। नेचुरली इमेजेस जो है अगेन 15 Pro Max में थोड़े से ज्यादा शार्प है इन कंपैरिजन विद द 14 Pro Max. So now when it comes to video, there's a considerable change when it comes to the 15 Pro Max. For example, ये भी आपको देता है to shoot in 3 different modes: HDR, HDR and log profile. तो अगर आप ऐसे यूजर हैं जो मैन्युअली ग्रेड करते हैं आपका फुटेज इन पोस्ट प्रोसेसिंग, दिस कैन बी अ बिग बोनस फॉर यू because it allows you to get more control on video and your files. Now personally I feel the percentage of users who actually use these sort of things are obviously far lesser, but अगर आप ऐसे यूजर हैं देन द USB Type-C पोर्ट भी जो है वो एक काफी अच्छा चेंज है जिससे आपका काम काफी इजी हो सकता है because it opens up a host of accessories that you can actually use. You can directly record into the SSD cards now or even external hard drives. So these are important things because this can make a life lot easier. So for instance अभी आप ये 15 Pro Max जो है वो एक 256 GB जो starting variant है वो भी ले सकते हैं and then you can actually shoot externally to save a lot of space. In terms of performance, both phones do very well. And iPhones जो है they've always done extremely well when it comes to the video. And 15 Pro Max जो है with that now you have bigger advantages.
वन वेरी इंपॉर्टेंट अपग्रेड ऑल्सो है कि ये फोन जो है ये अभी शूट करता है अक्रॉस ऑल फोकल लेंस एट 4K 60 FPS इन 15 Pro Max, जो लिमिटेड था 14 Pro Max पे, जो मैक्स टेलीफोटो ऑफ 6x जाता था एंड अल्ट्रा वाइड शूट करने नहीं देता था. So this is the sort of output that you get from both the phones actually. अभी जो आप देख रहे हैं ये फुटेज ऑफ कोर्स फ्रॉम द iPhone 14 Pro Max एंड इसका ऑडियो भी जो आप देख रहे हैं वो आपको सुनाई दे रहा है. It's really noisy out here, but I hope this gives you an idea of what we are able to shoot with the 14 Pro Max. And now we're going to switch to obviously the 15 Pro Max जो नया वाला फ़ोन है, and इसका आउटपुट ऐसा आपको दिखा रहा है. Of course HDR भी है इसमें. On top of that, there's a sort of audio output also that you can use. Now there are some other important things which are different as well, and sometimes you might miss them. For example, अगर ये दोनों phones के बारे में बात करूँ तो ये 15 Pro Max जो है that now features or feels a little bit taller, it's a little smaller, and in terms of size and specs as well, ये थोड़ा सा छोटा हो गया है. Of course, because of its titanium body, it now is lighter, and उसके वजह से एक अच्छा grip भी provide करता है. Because more and more when I'm using this phone, I can actually feel the difference when it comes to the 14 Pro Max. Now there are no ways to explain this unless you actually practically use both of these phones. HIF जो raw mode आया है, that is also very welcome change, because अभी आप इसे raw mode में shoot कर सकते हैं with a compressed file size जो पहले काफी बड़ी होती थी. So that saves a lot of space. अब ये दोनों में ही available है as part of the iOS 17 upgrade. Now next up obviously is the battery. Now when I talk about the battery as well, जब हम ये यूज कर रहे थे दोनों फोन्स को, तो iPhone 15 जो है वो थोड़ा सा हीट अप हो रहा था, बट आई डोंट ब्लेम इट बिकॉज ये जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स है विद द लेटेस्ट अपडेट. आई एम श्योर विद अ फ्यू मोर अपडेट्स दिस विल गेट मच बेटर लाइक द 14 Pro Max also did. Now another important update is the A17 Bionic Pro processor. A17 Pro Bionic processor. ये जो नया प्रोसेसर है, and this obviously comes in the Pro Max, this really makes things very different. For example, ये phone जो है overall ये काफी lucid feel होता है when you're using it. It's a lot faster. Because of this, you can actually do the next generation portraits as well. So who has the better camera, the 15 Pro Max or the 14 Pro Max? Of course, ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा और you have to answer the question that why do you use phones like these and cameras like these? For me, it's very simple. It's actually to shoot good pictures and also make life much easier. और ये continual improvements जो है iPhone के cameras में, that really make life very easy. To simply put, actually, it just makes you a better photographer. The reason is because it puts things in a very convenient and simple manner. Now I know आप क्या बोलोगे, but the 14 Pro Max obviously is cheaper, it's gotten a little bit more affordable, and it's only the telephoto lens that's actually coming in the 15 Pro Max. But that's not true. There's more than what meets the eye in this case. Apart from the cameras and the telephoto lens, there is a lot more which is happening here. There's a faster processor, there's a titanium body, it's a lot lighter, it's a little bit thinner, better grip. In general, from the output perspective as well, it's better sharpness, a lot more detail as compared to what you see. Then on top of that, of course, you've got better video where you have more control. You have the USB-C, especially Type 3.0, जो काफी faster transfer speeds देता है. So all of these things actually make this a compelling buy. Now whether you're upgrading from the 14 Pro Max या आप उसके पुराने generation से हैं, then definitely you will see a big difference. From the 14 Pro Max, in general, not just from a cameras but overall standpoint, a lot of the smaller things, you will definitely get that difference between the two. So if you like this video, then make sure that you like, share and subscribe to our channel, to follow us on Instagram as well. Look at our website as well and read our magazine, of course. And until next time, very important, happy viewing.